So about 12 or 13, 14 people have joined, and now we should start with our regular lecture. Just now I have अभी अभी स्क्रीन पर आपको एक ये दिख रहा है, टेक्निक्स इन प्लांट एनाटॉमी ऑर्गेनाइज्ड बाय एक बाहर के कॉलेज का है, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, so the same workshop was going on in the online. I was hearing that workshop. It is related to anatomy, how you are going to prepare the slide, and in what way you have to work for anatomy. That was explained. Okay, no issue. Our earlier topic in the theory, which was related to taxonomic evidences, and prior to that, in the practical, yesterday we have completed just some part which is related to how you are going to study the anatomy and what we are going to study from the different taxa, whether the stem, root, leaf, etc. are of which plant which we are going to study. That was explained in earlier practical. Let us have a look to material which we have prepared. I have not shared that material now, but I am going to give you introduction to, not introduction, but I am going to interested to take a review of yesterday's practical, and then we will start with our theory, that is, which is related to taxonomic evidences in relation to embryology, because we have completed part related to morphology, anatomy, and some part of embryology which we have shared. Just a minute. Let Word document should open so that it is easy for me to have an idea. Already I have prepared the Word document, just it was missing to add something. जो भी हमने कल डिस्कस किया है, ये सभी चीजें मैंने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड की है. That is what is anatomy, then what are the requirements of laboratory for studying anatomy. आप लोग सुन रहे हैं? Hello? Yes, sir. हाँ, so what are the requirements for laboratory study? Then yesterday I have told you regarding the transverse section, longitudinal section, TLS, RLS, etc. So it could be clear here. Transverse means it is tangent to longitudinal axis. Then here tangential longitudinal section and radial longitudinal section. Whenever your section passes through radius, then it is known as radial longitudinal section, and whenever it is tangent to radius, then it is known as a tangential longitudinal section. Then often we use the term vertical transverse section, specifically in case of the thalloid part. So that is called as a vertical transverse section. Then I have shown you how to take here sections, what are the different methods to cut the section, that is how to hold the material, correct way of holding the blade, holding the material, and stroke of the razor, etc. Then yesterday I have given you idea regarding the different parenchyma and collenchyma cells. As far as parenchyma considered, it shows presence of chlorenchyma, erenchyma. These are the modifications. And as far as collenchyma considered, they are lacunar or angular, and they are laminar, and comparatively these are compact. Then even I have given you idea regarding the different types of sclerenchyma cells, that is sclerites and fibers. I have shown you yesterday. Then these are the different types of tracheids and thickening of the wall of tracheids, and on basis of which we say that it is either annular or spiral or scalariform or reticulate or pitted, or it may have border pits, etc. Besides that, I have given you idea regarding the faces. I am just showing you each and everything I have explained in the previous practical. Lekin it was necessary to have material with you. I have now just prepared the material and going to share it to you. आप लोग सुन रहे हैं? हेलो?
Hello. Yes. Yes, sir. So yesterday we have discussed with the fact that there are different types of tissue system, and one of the important tissue system is epidermal tissue system. So on the epidermis, outgrowths or even stomata may present. There are different types of stomata, including anomocytic, anisocytic, parasitic, diacytic, or sometimes they are called as a caryophyllaceous stomata, ranunculus stomata, etc., or graminaceous stomata. Besides that, these are the different outgrowths which are available on the surface of a plant. So different types of trichomes and outgrowths available on the plant. Then normally we are going to stain the material by using different stains. So what is exactly stain and what are the different types of stain, why we are using a particular stain has been mentioned here, because plant shows presence of cellulose cell wall, and hence if they have cellulose cell wall we have to take the staining material such as aniline blue, then delpid hematoxylin, then pasquin, lightin, etc. If it is a lignin containing, then crystal violet or sapranine is used. If suberin cell wall, then sapranine is used. I think all of you are well known. We often use the stain sapranine in our laboratory because it gives color or dye to dead and lignified cells. So these are the different types of cell walls available in case of a plant. Then often we use single stain, that is sapranine, or sometimes we use the different combination of stains. That is, for double staining you might have used the sapranine and another stain that is known as a eosin, light green or fast green. And for cytological purpose, you might have used the stain such as hematoxylin or acetocarmine or acetoarsine, etc. So you can observe here the method or scheme which is given, how you are going to prepare the stain. Then when you are going to use more than one stain, how you are making the combination such as hematoxylin sapranine or sapranine fast green or sapranine aniline blue, sapranine crystal violet, etc. Because you are a PG student and you should be known with these different facts. And here the procedure is given, what are the different types of tissues and cells present in case of a plant. And yesterday I have mentioned the characteristic features of different types of tissues, including simple tissues such as parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and complex tissues such as xylem and phloem. आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. I am just describing it because yesterday in the previous lecture we have taken it, and now it is only giving you idea what I am going to share regarding that practical, so that you are going to complete your record. So as far as parenchyma or any type of tissue which is mentioned here, because parenchyma is further divided into different types, then collenchyma, sclerenchyma, then xylem and phloem. So these different tissues are mentioned here, different characteristic features, that is whether they are living or dead, what type of wall material they are, such as cellulose, pectin, शुरू में जो हमने देखा था, what are the different cell sets, what are the different main functions of these cell types, and in which area these cells are distributed. So that I have mentioned in this table. Though this table is comparatively big table, you can observe it whenever I am going to share it to you. Now, another important part in case of anatomy, because our practical is related to anatomical studies of different plant taxa, and that's why you should be well known with different anatomical features. So I have mentioned here comparison between stem and root. First, you should be known regarding what are the differences in stem and what are the differences in root, so that even if anybody gives you any plant material, you can identify that whether it is a stem or it is a root. So these are the different characteristic features in case of dicot and monocot, so that you can observe the difference in stem and root. Then comparison between stem of dicot and monocot plant. So these are the differences in dicot and monocot plant. You can go through it because it is not directly related to today's theory. It is related to practical. If required, we can even take the same practical again. But now just you observe, because I am going to share this document today, and at present it has 37 pages, and I am going to add still about
16 pages. That means it will become about 53 page document. So I am going to explain it. Even if it looks 53 page, for your convenience, 6 stems, then 5 root and 3 leaf. That is 6, 5, 11 and 3, 14. These 14 pages are important, and rest of pages are related to your clarity of the subject matter. Whenever we use any term, you should be known with these different terms. So here is the key for identification of whether that material is stem or root, whether it is of dicot or it is of monocot. The key is prepared. Then just now I have told you that I have yesterday mentioned 6 stem, including Giamets, Canna, Triticum, Boravia, Bougainvillea and Bignonia. So these 6 stems we are going to study, and here I am going to mention the anatomical features of these different stem in description as well as. So for example, it would be like this one. जैसे आप यहाँ देख सकते ये है description. For example, this description is of a canna, and figure of canna will be on the next page. So this will be figure of canna. So in this way, I am going to give you the description of all the 14 material which I have mentioned. In our earlier practical, just a minute. So in our earlier practical, I have mentioned 16 material. For example, these are the 6 stems: stem of maize, canna, wheat, boravia, bignonia, and I think dracena. So these are the six plant materials which were mentioned for the study of a stem. Then as far as root considered, I have mentioned root of 4 or 5 such as scissor, tinospora, beta, giamets, etc. as a root material, and leaf for mango, maize and nerium. अगर आप लोगों ने कल लिख के रखा है तो आप इन 14 मटेरियल की लिस्ट थोड़ा लेक्चर होने के बाद पोस्ट कर दो, तो सेम 14 मटेरियल का anatomical details as well as details of anatomy in the text I am going to share. Okay, कोई इशू है? हेलो. No, sir. Yesterday's practical के बारे में मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट जो अभी आप लोगों को दिखाया था, this word document I have prepared. Just the remaining part is that I have prepared this 37 page document. I have to add still the information as well as sections of about 8 plant materials so that it will be ready. I require about 1 hour, but prior to that all of you are requested to send the list of materials which I have told you yesterday. शायद मेरे पास जो लिस्ट है उसमें कुछ तो अलग मटेरियल मैंने पोस्ट किया है शायद, तो आप लोग ये पोस्ट कर दो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे. नो इशू. देन as far as our theory topic, today's theory topic considered, prior to this we are going to study the taxonomical evidences. As far as evidence is considered, evidence in terms of we say that evidence whenever characteristic feature or information from that evidence is used to either classify the plant or identifying the plant proper plant material on basis of that character. And such a type of information or evidences comes us from various branches of a botany and allied branches of a science. And these branches are like morphology, anatomy, although it is plant morphology and plant anatomy, then plant embryology, then palynology, then plant cytology, then phytochemistry, and next one, that is genome analysis. So in relation to these 7 points, we are going to finish our important part of our syllabus, that is 3rd unit. आप लोग syllabus देख रहे हैं? Hello? Yes, sir. क्या आप लोग syllabus देख रहे हैं? तो देख लो अपना मॉड्यूल नंबर 3 जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपना मॉड्यूल नंबर 1 फिनिश्ड है,
each and everything related to module number 1 is already provided to you. Even I am going to send the recording on YouTube. So if wanted or if you require, you can visit the YouTube. मैंने एक बात नोटिस की है कि आप लोगों में से बहुत सारे 50% से ज्यादा लोग YouTube की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, because normally it is a ready-made material, actual lecture which is recorded so that it is easy to understand. So you visit to our YouTube channel, no problem. Regarding our module number 3, which includes taxonomic evidences, and these taxonomic evidences comes to us from morphology, anatomy, embryology, palynology, cytology, phytochemistry, and genome analysis. So this is the first part of our module number 3. So it consists of about evidences from 7 different fields. Out of these 7 fields, we have completed part related to morphological differences and anatomical evidences, and we have already started the embryological evidences. Is it right? हेलो हेलो, क्या हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को स्टार्ट किया है? एनीबॉडी? क्या हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस थ्योरी में स्टार्ट है? हेलो? Yes, sir. Okay, so in the previous lecture we have started with the embryological evidences, and I have stated that as far as embryology is considered, very less work is done on basis of embryology because it requires the work is a time consuming, and many times success is dependent on stage of development which you are going to observe. That is, if you want to study embryological features of any genera, then you want to observe the proper flowering season of that material. Then you want to fix the material at appropriate stage. Then you have to prepare the slide and correctly observe. And for this purpose, very less embryological data is available. I have already told you that there are scientifically known more than 4.5 lakh plants as per recent estimation, and out of these 4.5 lakh, embryologically not more than 3,000 plants has been studied. Hello, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1% प्लांट का सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी हुआ है, and that's why these evidences are comparatively difficult. Then I have mentioned the different families which are marked out for distinct embryological features. डिस्टिंक्ट एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स के लिए कुछ फैमिलीज को मार्क किया था. उसमें से अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली दीज फैमिलीज आर फैमिलीज ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. You get it? Yesterday I have mentioned the family that is Podostemaceae. Podostemaceae is the family which is available from the aquatic habitat, and Podostemaceae includes perennial aquatic herbs with unique embryological feature, that is the formation of pseudo-embryo sac. I have already told you to write down the characteristic feature if required on your notebook. So जैसे ही Podostemaceae बोलते हैं तो आपके ध्यान में आना चाहिए Podostemaceae में false embryo sac या pseudo embryo sac बनता है. Family is characterized by occurrence of pollen grains in a pair. So pair of pollen grain and formation of pseudo embryo sac. These are the interesting embryological characteristic features of family Podostemaceae. Then beside this, it has a bitegmate teninucleate ovules. मैंने कल आपको teninucleate ovule के बारे में बताया था. Then bisporic embryo sac, and which is solanite type of embryogeny. Embryogeny is solanite type. Even if these simple 3 words or 3 lines mentioned, you should be known with different types of embryogeny. You must be known with different types of embryo sac. Whether it is bisporic, trisporic, or you must be known with teninucleate or other different types of bitegmic ovules. So this is regarding the family Podostemaceae and embryology of Podostemaceae. Then second family मैंने आपको बताई थी कल, that is Cyperaceae. As far as family Cyperaceae considered, मैंने आपको शुरू में बताया था कि Cyperaceae family जो है, Cyperaceae family aquatic plant की family है. Sorry, just a minute.
I have already told you regarding the family Cyperaceae, that is which is known as the family of Lavala, or which is important family of the monocot. As far as Cyperaceae family considered, the characteristic features of Cyperaceae are like formation of only one microspore per microspore mother cell, MMC, that is microspore mother cell. So normally microspore mother cell, if undergoes cell division or reduction division, it gives rise to 4 microspores or pollen grain. But in Cyperaceae, only one microspore or pollen grain is formed. There are different following meiosis of 4 microspore nuclei are formed. Only one gives rise to pollen grain and 3 are going to be degenerated. Besides Cyperaceae, only Epacridaceae in the few members shows degeneration of 3 microspore nuclei. मतलब अगर 4 में से 3 degenerate होते हैं और only one microspore is formed or only one pollen grain is formed, you can say that the plant may belongs to family Cyperaceae or plant may belongs to family Epacridaceae, provided that it has aquatic habitat. Cyperaceae is distinguished from these taxa in pollen shedding at the 3-cell stage. That is another interesting characteristic feature is that in Cyperaceae there is a pollen which are shed at 3-cell stage. As against the 2-cell stage shedding in Epacridaceae. Epacridaceae में पोलन शेड होते हैं 2-cell स्टेज में. मोस्ट ऑफ फैमिलीज में 2-cell यानी स्टेज में ही सेल स्टेज होते हैं. उसके बाद मैंने सेकंड थर्ड फैमिली बताई थी ओनेग्रेसी. एंड ओनेग्रेसी में एग्जांपल कौन सा बताया था मैंने कल आपको? अगर आपके पास नोटबुक है तो बता सकते हैं. Which example of onagraceae I have told you? श्रुति कटरे, ओनेग्रेसी का कौन सा एग्जांपल बताया था? प्रतीक्षा Ludwigia perennis. Yes, Yes, it's sir. Ludwigia perennis, or it is known as pan lavang. So I have deliberately repeating the same so that you can easily understand the family. So onagraceae or prime rose, as far as onagraceae family considered, I have mentioned the Ludwigia perennis, or which is known as pan lavang. लवंग मतलब क्लो आपको मालूम है, और पान लवंग बिकॉज द प्लांट इज ऑब्जर्व नियर द एक्वेटिक एरिया. पडल्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे, डीचेस होंगे, नहीं तो कोई फ्लो ऑफ वाटर होगा उसके आजू बाजू में. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस प्लांट इज अवेलेबल. सो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज 4 न्यूक्लिएटेड. नॉर्मली इसके पहले आपने 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक देखा होगा. क्या आपने 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक देखा है इसके पहले? हेलो हेलो, क्या आपने 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक देखा है? मैंने कल फोटोग्राफ दिखाया था आपको. आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो 8 न्यूक्लिएटेड आपने देखा था. अभी आप ओनाग्राड टाइप ऑफ डेवलपमेंट या ओनाग्राड टाइप देख सकते, so that you should have idea how these different types of. Now it is not possible to go through each and every type, but you just observe embryo development, how it occur. onagrad type of embryo development की जरूरत नहीं है, हमें देखना है embryo sac, that is 4 nucleated embryo sac. So you can observe it here. You can observe the different types of development of embryo. Just a minute. नहीं, यहाँ दिख तो रहा है लेकिन फिगर बहुत छोटी है. So you can observe here as far as monosporic development, polygonum type, then Oenothera type, then allium type, then Peprinus type. So these are the different types of development of microsporogenesis and megasporogenesis. So you can observe these different types of development of embryo sac. So onagraceae. Then
Here it is summarized with the specific examples of role of embryological data. कोई specific या important embryological examples है तो there are few examples of embryological data having been very useful in the interpretation of taxonomic affinities. Taxonomic affinities या interrelationship mention करने के लिए यहाँ अलग-अलग कुछ जनरा स्पेशलाइज्ड जनरा है. फॉर एग्जाम्पल जनरा इज ट्रैपा. क्या आप लोगों को ट्रैपा जनरा मालूम है? हेलो, क्या आप लोगों को ट्रैपा के बारे में कुछ आइडिया है? विच इज द ट्रैपा? यस सर. विच वन? सर एक्वेटिक है. हाँ, लेकिन क्या बोलते ट्रैपा को? यस, राइट. सिंगाड़े खाता तुमने? सर सिंगाड़े का सिंगाड़ा which is known as Trappa bispinosa. Trappa bispinosa. So I am deliberately showing you the figures of Trappa. शिंगाडे तुम्ही खाल्लेले असतील. शिंगाडे सुरुवातीला वेली असतात पाण्यामध्ये अशा प्रकारच्या, इथं तुम्हाला दिसतील. आणि हे जे आहेत हे कोवळे शिंगाडे आहेत. याला हा एक स्पाइन आणि हा एक स्पाइनी स्ट्रक्चर आहे. And so it is known as Trappa bispinosa. You can observe here the flower of Trappa bispinosa. You can critically observe here the fruit also, which is fully loaded with starch. So it is best known to you. So Trappa. So the important example is of genera Trappa. Genus Trappa was earlier, that is by Bentham and Hooker, included under the family Onagraceae. पहले Onagraceae में ये included था. It was subsequently removed to family Trapaceae. Engler Pantelner ट्रॅपाला स्वतंत्र फॅमिली मध्ये टाकलं and name of the family that is Trapaceae. On basis of distinct aquatic habitat, two types of leaves and habitat के आधार पर एंगलर एंड प्रंटल ने उसको अलग से फैमिली में इंक्लूड किया था, that is family Trapaceae. With सोलन पिटियोल. क्या आपने सोलन पिटियोल देखा है किसी जनरा में? हेलो हेलो, चलो मैं पिटियोल के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता. आपने लोटस का पिटियोल देखा है? हेलो, ये नॉर्मल प्लांट में आपने पिटियोल देखा है, लेकिन पिटियोल इन एक्वेटिक प्लांट्स, निम्फिया या लोटस में आपने पिटियोल देखा है? हेलो हेलो, ये नॉर्मल प्लांट का पिटियोल है. आप यहाँ देख सकते हैं, दिस वन इज इकॉर्निया या वाटर हाइसियांथ, और इसका पिटियोल जो है, दिस पिटियोल इज सोलन. सेम पिटियोल इज मेंशन्ड हियर, इट इज सोलन, और यू कैन ऑब्जर्व इट हियर वेरी क्लियरली. दिस वन इज द लीफ एंड दिस वन इज सोलन पिटियोल. अगर सोलन पिटियोल को काटा गया तो इट शोज प्रेजेंस ऑफ such a type of erenchyma tissue, and due to these erenchyma or air chambers, plant can float on the surface of water. You get it? Hello? Yes sir. Then I think you might have observed the petiole in case of Nymphia. क्या आपने निम्फिया का पिटियोल देखा है? कमळाचा पिटियोल बघितला आहे? हेलो, कमळाचा पिटियोल बघितलाय का? लीफ ज्या म्हणजे लॉन्ग पिटियोल असतं कमळामध्ये, and as far as लेवल ऑफ वाटर रिजर्वायर, वाटर की लेवल वाटर रिजर्वायर में कम ज्यादा होती है, तो दिस पिटियोल गेट्स आइदर कॉइल्ड और अनकॉइल्ड एंड लीफ रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अगर लीफ वाटर लेवल कम होती है तो पिटियोल का कॉइलिंग हो जाता है. वाटर लेवल ज्यादा हो गई तो पिटियोल फुल्ली एक्सपांड होता है. क्या आप लोगों में से किसी ने भिशी नावाचा प्रकार खाल्लेला आहे? हेलो. यस सर. हेलो, भिशी बघितले? दॅट इज नथिंग बट पिटिओल्स ऑफ निम्फिया. कमळाचे पिटिओल असतात जस्ट बॉईल केलेले, आणि दीज आर युटिलाइज्ड एज अ व्हेजिटेबल और दे आर used as a food material. So there are different embryological features observed in case of family, that is कौन सी फैमिली देख रहे हैं हम?
हेलो, स्पेसिफिक एग्जांपल हम देख रहे थे, एंड दैट इज इन केस ऑफ फैमिली ट्रैपेसी और जनरा ट्रैपा. सो इन केस ऑफ जनरा ट्रैपा, the interesting characteristic features are pyramidal pollen grains with three folded crest. पिरामिड लाइक, पिरामिड आपको पता है बेस की तरफ ब्रॉड और अपेक्स की तरफ नैरो होते जाता है. सो अरेंजमेंट इज pyramidal and it is three folded crest, that is bluntly triangular and basin shaped or onagracy. So pyramidal pollen grains in just a minute, pyramidal pollen grains in onagracy, trappa. Pyramidal pollen grains, हम देखते हैं पहले पिरामिडल पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं. सो यू कैन ऑब्जर्व सच अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पोलन ग्रेन व्हिच इज लाइक पिरामिड ग्रेन्स इन ट्रैपा. मतलब दिस वन इज व्हेरी टिपिकल. इथं फिगर नाही आहे, ट्रॅपाच्या पोलनची फिगर नाही आहे. आपण पोलन ग्रेन्स इन ट्रॅपा फक्त मिळतोय का बघू. आय थिंक it may not be available. नहीं है, available नहीं है. So yes, it's here. Pyramid like triangular pollen grains are observed. So these are the pollen grains in case of Trappa natans. अपन साधारणपणे ट्रॅपा बायस्पाइनोसा बघतो. So in case of Trappa, such a type of pyramidal arrangement of pollen grains is observed, and it is very interesting feature of a Trappa genera. Then you observe other characters such as ovary semi inferior, मतलब fully inferior नहीं है, ovary is semi inferior. Bilocular, bi means two locules with single ovule in each locule, single ovule in each locule. Not inferior, inferior नहीं है, semi inferior ovary है. Then polygonum type of embryo sac, that is not Oenothera type. Endosperm is absent. Embryo solanite type. One cotyledon extremely reduced and fruits large one-seeded group. So these are the different interesting embryological features of the Trappa which belongs to family Trapaceae. जैसे कि हमने पोडोस्टेमेसी देखी थी, साइपरेसी देखी थी, उसके बाद में ओनेग्रेसी देखी थी, और कुछ स्पेसिफिक जनरा में हमने पहले जनरा देखा था ट्रैपा बायस्पाइनोसा या ट्रैपा नटास. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनरा दैट इज पेओनिया. आई कैन रिपीट अगेन, out of 4.5 approximately 4.5 lakh scientifically known plant, just embryological studies has been completed for about 1%, and so on the large scale this information is not useful, but wherever required or it is used, we are going to take account. Just the next genera is the Peonia. आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. Hello. So the next genera is the Peonia. As far as Peonia considered, it was earlier included under the family Ranunculaceae. क्या आप लोगों को Ranunculaceae के बारे में आइडिया है? हेलो, क्या आप लोगों को Ranunculaceae फैमिली के बारे में आइडिया है? एनीबडी? यस और नो, झट से बता दो. Yes, sir. हेलो, नो. चलो मैं आपको जस्ट एक झलक दिखाता हूँ Ranunculaceae फैमिली की, so that it should be at least known to you. Sir, anemone is included in Ranunculaceae. Yes. Anemone is included in Ranunculaceae. As far as Ranunculaceae considered, there are several genera, but important genera is anemone. It is also known as a buttercup family, but you might be known with plant. आपने एनिमोन बताया, तब तक मेरे दिमाग में क्या था मैं भूल गया. जस्ट मिनट. यस, in my opinion you should have idea regarding the genera Clematis. शायद आपने ये जनरा देखा भी होगा और सुना भी होगा. In Marathi it is known as Ranzai, or it is known as Morzai Clematis Gauriana. I am specifically showing the plant. क्या आप लोगों ने ये प्लांट्स देखे हैं?
फ्लावर देखे हैं? आजकल होम गार्डन में भी आर्चेस के ऊपर लगा देते या कुंडी में पॉट्स में लगा देते, क्या आपने ये देखा है? क्लीमेटिस। सो एनीबडी नहीं देखा? It has typical such a type of akin type of fruits. Akin means aggregated type of fruit. Those who have visited Melghat or Tadoba, Melghat, etc. on the borders of a road के border पर जो shrubs है उन shrub पर ये flowers अभी रहते हैं during the rainy season. So this one is clematis. It belongs to family Ranunculaceae. As far as Ranunculaceae family considered, it shows several primitive characteristic feature. As far as primitive characteristic features considered, number of stamens more and these are spirally arranged is considered as a primitive characteristic feature. चलो, तो यहाँ मैंने आपको बताया था regarding the genera, that is Ranunculus, which belongs to family Ranunculaceae, but there is another genera, that is Paeonia. It also belongs to family Ranunculaceae. Just have a look. Paeonia देखते हैं हम. So this one is the genera Paeonia. Paeonia ornamental है, अपने यहाँ normally wild में नहीं है. Paeonia is ornamental genera. चलो ठीक है, no issue. We go through different other characteristic features of genera Paeonia. Paeonia was earlier included under family Ranunculaceae, but Wordsworth suggested its removal and to a distinct family, that is Paeoniaceae. Later on, it is included in Paeoniaceae. This was supported on the basis of centrifugal stamen. Centrifugal मतलब center से periphery की तरफ either older or younger stamens are added. And chromosomal information, chromosome की information के आधार पर the genus has such been placed in a distinct monogeneric family. Paeoniaceae is having single genera, that is Paeonia. Paeoniaceae in our modern system of classification, separation is supported by the following embryological features. अभी तक हमने generalized features of Paeoniaceae देखे. अब centralized features क्या है, embryological important features क्या है देखते. Number one, centrifugal stamen, that is not centripetal. Now you should be known with centrifugal and centripetal. Hello, hello, आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Yes, sir. Centrifugal stamens. आप लोग पढ़ तो सकते हैं, लेकिन you should have centrifugal stamens. Centrifugal stamens. Now you observe here the images of centrifugal stamen, or in spite of image we go through word. देखो, centripetal stamen initiation, that is centrifugal left versus centripetal right stamen initiation from figure number 3. Just a minute, क्या है ये figure number 3 हम देखते. So these are related to arrangement of a stamen. Stamen के arrangement से related है ये. This one is centripetal, this one is centrifugal and this one is centripetal. आप देख सकते हैं सेंट्रीपेटल में सेंटर की तरफ स्टैमेन की हाइट कम हो रही. आपके ध्यान में आ रहा है? हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सेंट्रीपेटल में पेरी से लेकर सेंटर की तरफ स्टैमेन की हाइट क्या हो रही है? कम हो रही. नहीं तो सेंटर से लेकर पेरी की तरफ हाइट बढ़ रही स्टैमेन की. While in centrifugal अगर आप देख रहे हैं तो सेंटर के स्टैमेन्स बड़े और पेरी के स्टैमेन्स छोटे. You get it? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. ऐसे हालात में अगर आपको कुछ टफ लग रहा है तो आप इमीडिएटली एक छोटी सी डायग्राम निकाल के उसको रख सकते. So as far as first characteristic feature is considered, it is centrifugal from Paeoniaceae, centrifugal stamens, not centripetal. Pollen with reticulate pitted exine. पोलन की पिट
पिटिंग कैसा आहे, एक्झाईन कैसे, इट इज रेटिक्युलेट. रेटिक्युलेट म्हणजे स्मूथ नाही, त्याच्यावरती रफ सरफेस आहे, सो वी कॉल इट एज अ रेटिक्युलेट. दॅट इज विदाउट एनी डेफिनेट पॅटर्न. एक्झाईन इज outermost wall of pollen. We are going to study it in next successive part of this unit. So pollen with reticulately pitted exine with large generative cell, unique embryogeny in which early divisions are pre-nuclear forming सिनोसाइटिक स्टेज. सिनोसाइट का मतलब होता है विदाउट एनी सेप्टा. अगर एक सेल है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई है, एक कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है इन बिटवीन, तो इट इज नोन एज अ सिनोसाइटिक न्यूक्लियस. एंड सीड्स आर अरिलेट. अरिल शायद आपको पता है, दैट इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर or cellular structure, solid structure which is developed behind the surrounding to embryo, which is known as the arylate. चलो नेक्स्ट जनरा है एक्सोकार्पस. अब हमने पहले ट्रैपा देखा, उसके बाद पियोनिया देखा, नेक्स्ट जनरा हम देख रहे हैं एक्सोकार्पस. एक्सोकार्पस इज ट्रेडिशनली प्लेस्ड अंडर फैमिली सेंटेलिएसी. क्या आपको सेंटेलिएसी फैमिली का प्लांट पता है? हेलो, anybody of you have observed the name of family or known with the name of family Santaliaceae? Hello, yes or no? Yes, sir. क्या क्या नाम है प्लांट का? सैंटेलम अल्बम. आपने नाम सुना है? हेलो, क्या आपने सैंटेलम अल्बम नाम सुना है? कौन सा प्लांट है सैंटेलम अल्बम? एनीबडी ऑफ यू? चंदन नाम सुना है? हेलो हेलो. Yes, sir. Chandan. Name of Chandan is Santalum album and it belongs to family Santaliaceae. थोड़ा सा ध्यान में रखो, शायद आपको पता होगा, चंदन प्लांट आपने देखा होगा, तो इट इज अ व्हेरी प्रिसियस. साधारणपणे तुम्हाला माहिती असेल, क्युबिक फीट मध्ये किंवा इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम चंदन इज सोल्ड इन अ मार्केट एंड देयर इज अ बैन ऑन चंदन. चंदन के व्यापार करने पर, सोल्ड करने पर मनाही है. So this is very precious, that is Santalum album. And the genera which we are going to study, Exocarpus. This Exocarpus is belongs to family Santaliaceae. Then now it is included in family Exocarpaceae near Taxaceae under Gymnosperm on the basis of articulated pedicel, that is naked ovule and presence of pollen chamber. So on basis of different character, Exocarpus is now included in different. Now next interesting character देखो, the anther has distinct endothecium and glandular tapetum. Pollen grains shed at the two cell stage. Embryo sac of polygonum type. Endosperm cellular and division of zygote transverse. This confirms that the genus Exocarpus is undoubtedly an angiosperm. मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि पहले इसको सेंटेलिएसी फैमिली में रखा गया था, बाद में उसको एक्सोकार्पेसी अलग डिफरेंट फैमिली में कंसीडर किया गया, एंड सम पीपल्स कंसीडर इट along with the gymnosperm, but on basis of different embryological characteristic feature, now it is clear that Exocarpus is angiosperm and it is included again in a family Santaliaceae with no justification for its removal to distinct family. डिस्टिंक्ट फैमिली में रिमूव क्यों किया, यानी सेपरेट के क्यों किया, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, एंड दैट्स व्हाई अगेन नाउ इट इज इंक्लूडेड इन फैमिली सेंटेलिएसी. जिनके पास नोटबुक है वो नोट करके रखे, एम्ब्रियोलॉजी आया तो एक्सोकार्पस और फैमिली सेंटेलिएसी आपको मेंशन करना है. दिस जीनस इज सच अ प्लेस इन सेंटेलिएसी इन ऑल द मेजर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. चलो नेक्स्ट फैमिली है लोरेंथेसी. क्या आपको लोरेंथस के बारे में पता है? हेलो सुहाली, मेरी आवाज सुन रहे? हर्षा,
कौन अवेलेबल है? Yes, sir. हाँ, लोरेंथस के बारे में आपने कुछ सुना है? Yes, sir. हाँ, क्या है लोरेंथस? सर इतना तो आइडिया नहीं, शायद पैरासिटिक प्लांट है। Yes, yes, it's a parasite specifically on the mango plant. Mango plant के ऊपर जो parasite मिलते हैं, that is known as a loranthus, or in Marathi you call it as a bandgul. So you can observe here, this one is a parasitic plant and it is known as loranthus. So loranthus is normally observed on the mango plant. So you observe it here. So this one is a loranthus growing on the branch of mango. So लोरेंथस के फ्लावरिंग भी आपने देखे होंगे, जहां लोरेंथस है वहां बर्ड्स बहुत मिलते हैं, बिकॉज दिस फ्लावर हैज food material for the birds, and that's why birds are visiting to loranthus. So you can observe these are the different images of loranthus, how it is going to invade the mango plant. सगळ्यात जास्त मँगो प्लांटला जर धोका कोणाकडून असेल तर लोरॅन्थस पासून. जस्ट अ मिनिट, हम लोरेंथस के बारे में जस्ट एक दो लाइंस में हम देखते हैं. It is a semi-parasitic Asian plant of the Mistoli family, which was orange or red colored flowers and oval berries. Phi lorenthus is known as partially parasitic. Where is lorenthus found? हम ये देख लेते. Loranthus micranthus represent the eastern Nigeria, that mostly grown in the southeast region of the country. It was on various host trees including Persea americana, Papia nitida. लेकिन in India, Loranthus is observed on the mango plant on the large scale. Just a minute. We can have images of Loranthus on mango plant. सगळ्यात जास्त आपल्याकडे मिळतं ते आंब्याच्या झाडावरती मिळतं. So it is known as a bandgul on mango. Even on any other higher plant also it develops, but in case of mango it is more troublesome. So this one is Loranthus. So here we are going to study regarding the family Loranthaceae. Loranthaceae is traditionally divided into subfamily Loranthoideae and Viscoideae, largely on the basis of presence of uh, calculus below the perianth in the form of former and its absence in latter. चलो हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे. Allium type of embryo sac, early embryogeny, many tired embryo suspensor is absent and viscid layer of inside the vascular supply of a fruit. So these are the interesting characters of Loranthaceae. Chalo, just a minute. So in this way we have completed evidences to taxonomy from three important branches. First one, that is morphology, second one, that is anatomy, and third one, that is embryology. Now remember, it is quite difficult to remember each and every character. Even if you go through some of the notes available online, you can have an idea that there are just notes of about 5 to 6 lines only. But these are not sufficient, and each and everything should be discussed with you. And that's why I am explaining each and everything which is related to this. अब इसके बाद हमें लेना है अनदर, दैट इज एविडेंसेस ऑन बेसिस ऑफ पैलिनोलॉजी. चलो हम इधर देखते हैं. हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कंप्लीट किया, एनाटॉमिकल एविडेंसेस कंप्लीट किया, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कंप्लीट किया, एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन पैलिनोलॉजिकल एविडेंसेस. So just we will take a break of 5 minutes and we will continue the next subsequent, that is palynological evidences in relation to taxonomy, just for 4 to 5 minutes only. You can also take a break.
Okay, now the fatty acid and lipids. Okay. हेलो, आप लोग रेडी है? Yes, sir. हेलो, हाँ. Yes, sir. So now we are going to study regarding different evidences in the field of palynology. Anybody of you tell me what is palynology? Anika? It's a study of pollen grains. Not only pollen grains, but study of Oh, pollen and other objects available in the atmosphere. जो भी एटमॉस्फेयर में है, फिर वो इंसेक्ट्स होंगे, कोई फ्रैगमेंट्स होंगे, कोई फंगल स्पोर्स होंगे, कोई प्लांट स्पोर्स होंगे, इन सभी का स्टडी दैट इज पैलिनोलॉजी. So there are some of the evidences available from the field of palynology, and in relation to various available evidences from palynology, we have some idea regarding evidences to taxonomy. So palynology is also one of the important branch. Pollen wall has been subject of considerable attention, especially in the attempt to establish evolutionary history of angiosperm. शायद आपको पता होगा, हनी बीज हमेशा प्लांट्स को विजिट करते इन द सर्च ऑफ अ हनी और इन द सर्च ऑफ अ नेक्टर, and while visiting to flower they are capturing the pollen grains, and these pollen grains are sources of proteins. Many times wall of a pollen is made up of protein, and that's why this pollen is a source of food material honeybees. आप लोग सुन रहे हैं?
Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो just like other parts of a plant, these pollen grains have also their own morphology. That is, differences in size, shape, structure, ornamentation, pattern of the pollen grain. जैसे हमने एपिडर्मिस स्टडी की, दैट इज लेयर्स ऑफ अ डिफरेंट सेल्युलर लेयर्स ऑफ अ प्लांट, वैसे ही हमें पोलन के लेयर्स भी देखना है एंड व्हाट आर द डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड ornamentation patterns observed in case of a pollen grain. Pollen wall has been a subject of considerable attention, especially in an attempt to establish the evolutionary history of angiosperm. Some families, such as Asteraceae, show different types of pollen grains, that is Europallinus. Europallinus बोलते हैं, Euro, that is advanced type of pollen grains observed in case of family Asteraceae. Whereas several others has a single morphological pollen type. These are known as Stenopallinus. आप दोनों टर्म अभी ध्यान में रखो, Europallinus and Stenopallinus. Stenopallinus groups are considerable significance in systematic palynology. यानी plant systematics में Stenopallinus group जो है, it has given more importance. Pollen grains present in a number of features of taxonomical interpretation. Pollen grains की morphology has played very important role in taxonomic interpretations also. Number of nuclei present at the time of shading is also significant. इसके पहले हमने एम्ब्रियोलॉजी में देखा था कि कुछ प्लांट्स में 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन डिस्चार्ज होते हैं, कुछ प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में होते हैं और कुछ प्लांट्स में सिंगल सेल. Most primitive angiosperms are shed at 2 nucleated stage. Most primitive कैसे 2 nucleated stage में होता है. Where in more advanced group pollen is shed at 3 nucleated stage. मतलब 3 nucleus के stage पे advanced में होता है. Angiosperms mostly have pollen grains of radial symmetry. Symmetry कैसी होती है? Radial. Bilateral symmetry being found in several gymnosperm. Gymnosperm में bilateral symmetry. Most pollen grains are globose in shape. Globose मतलब clear cut circular नहीं है, it is globose. Although boat-shaped, ellipsoidal, fusiform are also made in different angiosperm. Since most pollen grains are least in early stages from tetrad, outer end of the grain is termed as a distal pole. Outer end जो है उसको distal pole बोलते हैं. Whereas the inner end where the grain meet as a proximal pole. Just a minute. अभी आप मेरे हाथ में एक बॉटल देख रहे हैं. हेलो. Yes, sir. हेलो. अगर मैंने ये बॉटल ऐसे पकड़ी तो मेरे लिए डिस्टल पार्ट कौन सा होगा और नियर पार्ट कौन सा होगा? ये जो कैप की तरफ का पार्ट है, दिस इज अ डिस्टल मेरे हिसाब से. इज इट राइट? Yes, sir. एंड दिस वन दैट इज बैक साइड, नीचे वाली साइड जो है ये मेरी तरफ नजदीक वाली साइड है. तो वैसे ही इन केस ऑफ pollen grains, in case of pollen grains there are distal pole and another is a proximal pole. Proximal म्हणजे आपल्याकडच्या बाजूचा, distal म्हणजे लांबचा. And the line joining two poles as a polar axis. दोनों पोल को जोड़ने वाली जो लाइन होती है that is known as a polar axis. शायद आपको अर्थ के एक्सिस के बारे में पता है. अर्थ को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, और इन दोनों पोल्स को जोड़ने वाले लाइन्स. The line running around the pollen at right angle to polar axis is termed as the equator. Equator के बारे में भी आपको पता है. हेलो. Yes, हेलो. sir. अर्थ का सरफेस आपको पता है, it is a circular और राउंडेड. हम राउंडेड बोलते हैं कारण की एक्सिस कडच्या बाजूला चपटी आहे थोडीशी. नॉर्थ पोल आणि साउथ पोल या दोन्ही पोलना जोडणारी दॅट इज पोलर लाईन. और सेव्हरल नंबर ऑफ जितके असतील तेवढे पोलर लाइन्स. उदाहरणार्थ आपण त्याला अक्षांश आणि रेखांश असं म्हणतो इन केस ऑफ आवर अर्थ. फाइल सेंटर पर जो सभी को क्रॉस करती है दैट इज नोन एज द इक्वेटर. सो हियर यू हैव आइडिया रिगार्डिंग द पोलन मॉर्फोलॉजी. अभी हम पोलन एग्रीगेशन के बारे में देखते हैं. इसके पहले आपने देखा है कुछ केसेस में सिंगल पोलन
यानी आइसोलेटेड पोलन रहता है, कुछ केसेस में डायड रहता है, कुछ केसेस में ट्रायड रहता है. In many cases they are tetrad. Tetra म्हणजे 4 फॉर्म होणं. So monad, dyad, triad and tetrad. And in some cases there are polyads. Polyad म्हणजे more than 4 pollen grains remains close and then they form the polyads. You get it? Hello? Hello? Yes, sir. Monads, Yes, monads, dyads, triads, tetrads and polyads. अब हम इतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं सो दैट यू हैव आइडिया रिगार्डिंग द रोल ऑफ पैलिनोलॉजी इन मॉडर्न साइंस. एक स्टोरी है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. एक आदमी ने अपना मृत्यु पत्र लिखा था, विल लिखा था, और कुछ समय बाद वो जो विल लिखा था वैसा ही एक विल दूसरे एक पार्टी ने प्रोड्यूस किया. एंड नाउ इट कम्स टू जुडिशियरी वेदर टू डिसाइड न्यूली प्रोड्यूस्ड विल इज वेदर वैलिड और नॉट, और इट इज ओरिजिनल और नॉट. तो इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान में रखो हाउ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व. उस जमाने में इंक का यूटिलाइजेशन करके लिखाण किया जाता था या राइटिंग किया जाता था. ऐसे हालात में उन्होंने देखा कि दोनों भी इंक से लिखे हुए हैं, लेकिन शायद आपको पता होगा विल वगैरह जहां लिखते वहां प्लेस भी लिखी जाती. म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो की होशो हयात में, किंवा हिंदीत म्हणतो होशो हयात में मैंने ये विल लिख के दे रहा हूं और ये मैंने XYZ जगह पे बैठ के लिखा है. तो वैसे उस विल पे लिखा था कि ये विल जिस खेत में बैठ के लिखा है वहां बहुत सारा ग्रास है. क्या आप सुन रहे हैं? Yes, sir. दोनों भी विल में ये लिखा था कि वहां बहुत सारा ग्रास है और ग्रास के पोलन ग्रेन्स भी डस्ट हो रहे हैं इस एरिया में. तब इन लोगों ने क्या किया कि ये दोनों विल फोरेंसिक टेस्ट के लिए दिए गए. देने के बाद ध्यान में आया कि एक विल के ऊपर जो इंक है उस इंक में कुछ ग्रासेस के पोलन ग्रेन्स, ड्राई पोलन ग्रेन मिल रहे और दूसरे पर कुछ भी पोलन ग्रेन नहीं थे. और उस आधार पर ये कंफर्म किया गया था कि क्या ये इन दोनों में से कौन सा विल लीगल है या ओरिजिनल है. आपके ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. जहां इंक से ये लिखा गया उस इंक में ये पोलन ग्रेन मिक्स हो गए थे. अब ये स्टोरी या कहानी की बात छोड़ो, लेकिन पैलिनोलॉजिकल डाटा इज वेरी यूजफुल इवन नाउ. So there are different types of pollen grains and these are like tetrahedral, linear, rhomboidal, tetragonal and decussate types of a tetrad. Tetra का मतलब क्या होता है? 4. हेलो Yes, sir. Yes, sir. टेट्रा का मतलब होता है 4. अब टेट्रा, जस्ट मिनट हम देख लेते. टाइप्स ऑफ पोलन टेट्राड, so that it is easy to understand for you. टेट्रा मतलब 4. कई बार 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं एंड व्हाटएवर, लेकिन हमें यहाँ देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेट्रा. माइक्रोस्पोर या पोलन के टेट्राड आप पहला देख लो. पहला कौन सा है टाइप? ए टाइप कौन सा है? हेलो हेलो. Yes, ए टाइप Yes, sir. टेट्राहेड्रल. टेट्रा मीन्स 4. टेट्राहेड्रल. शायद आपने देखा होगा एक से ज्यादा गुब्बारे एक जगह पे बांध के हम कुछ फिगर्स बनाते हैं. वैसे समझ लो कि 4 गुब्बारे एक जगह बांध दिए तो कहीं से भी देखने के बाद आपको नॉर्मली 3 दिखते हैं और चौथा which is on the background. Is it clear to you? Yes, sir. So first one Yes, is sir. tetrahedral. शायद आपने रिक्सिया का नहीं तो ऑपियोग्लॉसम का टेट्राड जब निकाला था, रिक्सिया का ऑपियोग्लॉसम का एलियस जब आपने देखा था तब टेट्राहेड्रल ये टर्म यूज की थी. उसके बाद आइसोबाइलेटरल. आइसोबाइलेटरल का मतलब बाय मींस 2, दोनों तरफ एक जैसी फिगर बन रही.
और ये भी टेट्राड है, लेकिन दिस वन इज आइसोबाइलेटरल. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल. उसके बाद में डिकसेट. अब डिकसेट में देखो, ऊपर वाले एरिया में 2 है और नीचे एक और बैक साइड में एक. सो ऐसे टेट्राहेड्रल के बाद में हमने देखा डिकसेट. उसके बाद नेक्स्ट देखो टी शेप, ऊपर 2, नीचे लीनियर ऑर्डर में 2. सो this one is a T shape and this one is a linear tetrad. So you get it. What are the different types of tetrads? That is tetrahedral, isobilateral, decussate, T-shape, linear. So these are the different types of tetrad. And pollinia in case of Calotropis or pollinia in case of Asclepiaceae, these are formed in the form of a pollinia, that is waxy pollens. So you can observe here the different types of pollen tetrad analyzed in different plant. वेगवेगळ्या प्लांट मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे पोलन टेट्राड्स बघायला मिळतात. जस्ट अ मिनिट. क्या आप अभी पोलन देख रहे हैं? हेलो, एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन आप देख रहे हैं? So you can observe the germ for nucellus. Then what are these are the different parts. सबसे outermost layer है, this outermost layer is exine. इसके नीचे जो रहती है intine. Now this exine and intine has a different other layers also. ये other layers के बारे में हम डिटेल्स में देखने वाले हैं next. So this one is the fine structure of a pollen wall. Pollen wall का fine structure है. यहाँ लेबल किया है A, B, C, D and E. A is intine, B is endexine, C is foot layer, D is baculum, E is tectum. So these are the different layers. शायद आप लोगों को पता होगा, अगर आपने अपने स्क्रीन पर कोई खरोच पाया या कोई कट लेने की कोशिश की तो अलग अलग लेयर्स आते क्या नहीं? हेलो, अलग अलग लेयर्स आते हैं और शायद आपको पता भी होगा कि ये इन अलग अलग लेयर्स में पहले सफेद वाली लेयर रहती है. इज इट राइट? उसके बाद थोड़ी सी ग्रीनिश या ब्लूइश लेयर रहती है और उसके नीचे आप लेयर पाते हैं स्किन की, विच इज रेड. हेलो हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? सो दिस इज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन वॉल, that is intine, endexine, foot layer, baculum, then tectum, and this one is apparatus with different layers. Chalo. In some genera such as Calliandra of Mimosidae, the pollen grains are connate in a group more than 4. क्या आपने Calliandra plant सुना है? हेलो, Calliandra plant का नाम सुना है या देखा है? It belongs to family Mimosaceae. क्या ये देखा नहीं है? Yes, sir. पर शायद सर फैबेसी को बिलोंग करता है ये. हाँ, Mimosaceae मतलब फैबेसी का ही है. Fabaceae is further divided into 3 subfamilies, that is Papilionoideae, Mimosoideae and Cisalpinoideae. लेकिन ये तीनों फैमिलीज बहुत बड़े हैं करके हम उसको बोलते हैं Mimosaceae. Is it clear? Okay, sir. Fabaceae is one of the largest family of Angiosperm. लेकिन remember it is divided into 3 subfamilies. लेकिन ये जो सब फैमिलीज बने हैं वो भी अपने नॉर्मल फैमिली से बड़े हैं and hence they are also known as families or they are given the rank of family. इसका जनरल नेम आपको पता है? हेलो, क्या इस प्लांट का जनरल नेम आपको पता है? इसको बोलते हैं पफ बॉल. हेलो, या पाउडर पफ. हेलो, आपको पता है आपके वैनिटी बॉक्स में नॉर्मली ये पाउडर लगाने के लिए पफ रहता है. इट इज a hairy and sometimes even it may show presence of silky hairy structure or velvet like structure or even spongy structure.
So this one is known as Calliandra, and Calliandra belongs to family Mimosaidae or Mimosaceae, or it is also known as Fabaceae. So in case of genera such as Calliandra of Mimosaidae, the pollen grains are connate in a group of more than 4. Such a pollen grains constitute a polyad. मैंने आपको मोनाड, डायड, ट्रायड, टेट्राड और पॉलीएड बताया था. तो पॉलीएड का एग्जांपल है कैलिएंड्रा. शायद आप लोगों में से जो लोगों ने विजिट किया है महाराज बाग को, महाराज बाग का राइट हैंड साइड का जो गेट है, उस गेट के पहले और कहीं गार्डन में आपने कैलिएंड्रा देखा होगा. कैलिएंड्रा हिमेटोसिपेला. सो इट इज रेड इन कलर. So polyad generally consists of 8 pollen grains and rarely more than 10. In some members of family Orchidaceae, as for example genus Piperia, large number of pollen grains form irregular group on which there are more than one group is known as a theca. These are known as a muceli. In subfamily Asclepidoideae of family Apocynaceae. अब थोड़ा सा ध्यान में रखो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था अर्लियर Asclepiadaceae was included in Apocynaceae. बाद में Asclepiadaceae को अलग से फैमिली का दर्जा दिया गया, लेकिन at this stage now again it is divided into or merged into family Apocynaceae. आप लोग ध्यान दे रहे हैं? पहले Asclepiadaceae अलग फैमिली थी, लेकिन अभी उसको इंक्लूड किया है इन फैमिली Apocynaceae. जस्ट मिनट, एक 2 मिनट का मुझे ब्रेक लेना है, मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए. जस्ट मिनट, 2 मिनट का लिए ब्रेक ले रहा हूं. मैं हूं just a minute. Okay, so we have taken idea regarding monad, dyad, tetrad, polyad, etc. Now regarding the pollen wall, as far as आप लोग सुन रहे हैं ना? Yes, sir. So as far as pollen wall is considered, pollen wall has exine and intine. I have already told you, exine is hard and impregnated with sporopollenin. Sporopollenin is a substance which is related to pollen and spore. So it is known as a sporopollenin, very important part of the pollen. So exine is hard and impregnated with sporopollenin, a substance that
makes it resistant to decay, decaying से resistant नहीं होता, and enables preservation in fossil record. मैंने अभी अभी आपको जो स्टोरी बताई थी उस स्टोरी में इंक पर जो पोलन ग्रेन्स थे वो जैसे के वैसे थे, और उसका रीजन क्या था? देयर एक्साइन और आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड दैट्स व्हाई दे आर रेजिस्टेंट टू डीके. A substance that make it resistant to decay and enable preservation even in a fossil record. Exine is further differentiated into two layers, that is ectexine and another, that is indexine. The ectexine is further distinguished into basal foot layer, radiantly elongated columella and root-like tectum. Next figure आपको 7.4 आपने पहले ही देख ली है. So these are the different layers of a pollen wall. Pollen wall sculpturing, just मैं आपको बता देता हूँ. Sculpture यानी texture present on the outer surface of tectum or often certain super practical projections which provide variety of sculpturing to exine wall, in some cases lacking tectum. So common types of sculpturing includes baculate या क्लैवेट या इकिनेट या स्पाइनुलोज. शायद आप लोगों ने हिबिस्कस का पोलन देखा है. हेलो हेलो, Yes, sir. हिबिस्कस का पोलन आपने देखा है? Yes, sir. आप बोलते हैं पोलन कैसे है तो स्पाइनी है बोलते थे. इज इट राइट? हेलो, जस्ट मिनट. Pollen sculpture. So you can observe here different sculptures on the surface of a pollen. Just a minute. क्या आपको ये पोलन दिख रहे हैं? हेलो, आपको ये पोलन दिख रहे हैं? These are scanning electron microscopic photographs of pollen, and you can observe the different size, shape as well as ornamentation pattern on these pollen grains. Just a minute. हाँ, ये दिख रहे हैं? Hello. So you just Yes, observe sir. these are the different ornamentation on the pollen grain. जैसे आप hibiscus का pollen अगर देखना है तो just we have idea regarding hibiscus pollen. Hibiscus pollen grain आप देख रहे हैं? हेलो, Yes, sir. जैसे आप लोगों ने अभी आप लोगों ने बहुत बार डायग्राम देखी होगी कोविड-19 कोरोना वायरस की, वैसे ही if you have taken like enlarged photomicrograph of hibiscus, it looks like spiny. So there are different types of ornamentation patterns observed on the pollen. Then pollen aperture, that is aperture which is present on the pollen. So you can observe pollen aperture is specialized region of pollen wall through which pollen tube comes out. Exine may be inaperturate. Inaperturate means without an aperture, or it may be aperturate. An aperturate pollen may have single pore, that is monoporate, or it may have single colpite, that is monocolpate, or it has 3 slits, then it is known as a tricolpate, or 3 pores, then it is known as a triporate, or it may have pores as well as colpite, 3 in a number, then it is known as tricolporate. With many pores, it is known as a multiporate. So you just observe here the figures. क्या आप लोग अभी फिगर देख रहे हैं? हेलो, Yes, sir. Yes. आपके लिए मैं यहाँ फिगर दिखा रहा हूँ. That is SEM of pollen grain. S means that is scanning electron micrograph. So SEM में पहला देखो, that is non-aperturate pollen grain of Persica americana. क्या आप बता सकते हैं पर्सिका अमेरिकाना का नाम आपने कहीं सुना है या देखा है? एनीबडी? हेलो,
हेलो, क्या आप लोगों में से कोई वो कौन सी ये है कार्टून, जस्ट मिनट, वो कार्टून कौन सा है बच्चों का फेमस? हेलो, परसिमन खाने वाला कार्टून कौन सा है? परसिमन फ्रूट खाने के बाद शक्ति आती है ऐसे बोलने वाला बच्चों का कार्टून कौन सा है? एनीबडी? हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या आपने परसिमन करके फ्रूट के बारे में कुछ सुना है? वो जो कार्टून फिल्म No, रहते sir. हैं उसमें, जस्ट मिनट। हाँ, क्या आप डोरेमोन देखते हैं? हेलो, Yes, sir. तो डोरेमोन में कहीं आपने परसिमन का नाम सुना है? परसिमन करके फ्रूट? हेलो, हेलो, Yes, sir. परसिमन नाम के फ्रूट के बारे में आपने कभी सुना है? No, sir. ये फ्रूट्स आप लोगों ने देखे हैं? दे लुक्स लाइक जस्ट टोमेटो। Yes. नहीं देखे? Yes, sir. देखिए. थोडेसे आंबट गोड लागतात. साधारणपणे गेल्या वर्षी म्हणजे फेब्रुवारी मार्च मध्ये साधारणपणे हे फ्रूट मार्केटमध्ये आले होते अँड दीज आर नोन ॲज अ पर्सिमॉन. सो ॲज फार ॲज पहली डायग्राम है दैट इज रिलेटेड टू नॉन एपर्चरेट पोलन, मतलब कहीं भी आपको एपर्चर नहीं दिख रहा है एंड इट इज नोन एज पर्सिका अमेरिकाना, दैट इज पर्सिमॉन. देन बी डायग्राम which is monosulcate pollen grain, मोनोसल्केट सल्काय, दैट इज आप यहाँ देख सकते हैं एक सिंगल स्लिट है. इज इट राइट? हेलो, बी डायग्राम में आप देख सकते हैं इट इज इलोंगेटेड एंड इट इज ऑफ अ प्लांट मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा. मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा मतलब कौन सा प्लांट? एनीबडी? मायकेलिया चंपका जो म्हणतात त्याच फॅमिली मधला, दॅट इज मॅग्नोलिएसी फॅमिली मधला. यू कॅन ऑब्जर्व इट इज इलोंगेटेड एंड इट हैज वन लॉन्ग फरो एंड देन इट इज नोन एज मोनोसल्केट. उसके बाद सी देखो, मोनोपोरेट पोलन ग्रेन. क्या आप देख रहे हैं? हेलो, हाउ मेनी पोर्स आर ऑब्जर्व? हेलो, आप सुन रहे हैं क्या नहीं? Am I Yes, sir. audible? Yes, So sir. this one is a single pore and hence it is known as a monoporate. उसके बाद डी डायग्राम देख लो which is tricolporate pollen grain of Savolia glabra. ट्राइकोल्पोरेट आप यहाँ देख सकते हैं, दिस वन इज अ पोर. यहाँ देख सकते हैं, दिस वन इज अ पोर. ये जो तीसरी रीज दिख रहे हैं वहां भी आपको पोर दिखने मिलेगा उस साइड. सो कोल्पा भी है और पोर भी है और there are 3 in a number, so it is known as tricolporate. Is it clear to you? Colpi means long furrow. Is it clear to you? Yes, sir. Next, Yes, E sir. diagram. E diagram देखो, it is a polyporate. Poly means many. आपको many pores वहां दिख रहे हैं, so it is a polyporate. So polyporate spinos pollen grain of hypomia. क्या आप लोग hypomia plant जानते हैं? हेलो, क्या आप लोग हाइपोमिया प्लांट जानते हैं? हेलो, हाइपोमिया नहीं जानते? हेलो, Yes, कौन sir. जानते हैं कौन सा प्लांट है ये? क्या लोकल नेम क्या है इसका? बेशरम किंवा गारवेल. हेलो, आपने सुना? याचं Yes, नाव, sir. लोकल नाव याचं बेशरम किंवा गारवेल. There are no doubt different members of this family and this one it belongs to family. कौन सी फैमिली का है? This one belongs to family Convolvulaceae and in this family such a type of polyporate pollen grains are observed. So you have idea regarding now pores also. Then next one हम F diagram देखते हैं, that is tricolpate pollen grain in case of dianthus. Dianthus में आप देख सकते हैं tricolpi, मतलब only 3 colpi are available. You get it?
हॅलो, फक्त 3 कोलपाय दिसतात. So by using the palynological character, you can have an idea regarding these different genera or families. So these are the different interesting features of different plant material. Then micromorphology and ultrastructure. Micromorphology और ultrastructure के बारे में भी कुछ evidences है. Micromorphology, that is related to SEM studies, which has been made primarily on pollen grains, small seeds, trichomes and surface features of various organs. लेकिन मैं इस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि there are certain evidences available from the morphology of the pollen grains. So these are the different micromorphological evidences. So you can observe the SEM characteristic features of angiosperm. पहला देखो, seed of Siletium campectum, which belongs to family Alosaceae. अब अगर ये सीड देखा तो इट इज वेरी माइन्यूट सीड. SEM डायग्राम है, उसके सरफेस पर स्ट्रक्चर्स कैसे है. Then next one, B seed coat of Agentia indica. Agentia indica चा seed coat कसा दिसतोय बघा. But remember, these are electron micrographic photographs. So you can observe such a variety of different types of photographs and primary and secondary sculptures on the pollen grain or on the seed or on other parts of the plant. Even tertiary also, primary, secondary and tertiary sculpturing is observed. Now you can observe here various forms of sieve tube plastid and their possible evolution. अब इन डायग्राम की तरफ आपको सिर्फ देखना है, इसके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. So these are the different details observed regarding taxonomic evidences of palynology. Then we have to go through another important, that is taxonomic evidences in relation to chromosome analysis. क्या आपको साइटोलॉजी या क्रोमोसोम के बारे में आइडिया है? हेलो हेलो, क्या आपको साइटोलॉजी और क्रोमोसोम के बारे में आइडिया है? हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो, आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. So you are better known that chromosomes number in case of any species is fixed from generation to generation. क्रोमोसोम नंबर नॉर्मली फिक्स होता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी दिस क्रोमोसोम नंबर मे गोइंग टू बी चेंज. So chromosomes also play important role in taxonomy. So we can have an idea regarding chromosome. Chromosomes are the carriers of genetic information and as such have considerable significance in evolutionary studies. Increased knowledge about chromosome and their behavior has largely been responsible for extensive biosystematic studies and development of biological species concept. इसके पहले मैंने आपको बताया था कि large quantity of information regarding various aspects of plants is available after 1950s. Due to discoveries in the field of science, enough information is available regarding each and every part of a plant, and that's why this information is used to classify the plant on basis of scientific manner, and that's why here we are going to study these different characteristic feature. Now regarding the chromosome, during the first quarter of the 20th century, chromosomal data was relatively sparse. Sparse म्हणजे कमी होता. Such a information has markedly increased over the last few decades. However, with ample useful information coming from the studies of banding pattern, 3 types of chromosomal information has been significant in systematics. अलग-अलग type की information. अब इसमें 3 टाइप कौन से है हम देखते हैं. क्रोमोसोमल नंबर, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि as far as chromosome considered, their number is constant from generation to generation. That means within a single genus or within a single family, chromosome number is constant. So extensive record regarding the chromosome number are available in the work of Darlington and Janaki Ammal in 1945. Remember, Janaki Ammal
is a Indian worker. Darlington and Wiley 1955, Pedro 1969, Love et al 1977. So all these are work in the direction of chromosome number, and International Association of Plant Taxonomy has also published index plant chromosome number. शायद आपको पता है 2n is equal to 16 in case of family Liliaceae, and material which you have used, that is Allium cepa and Allium sativum. Is it right? Hello. कांदा आणि लसणामध्ये क्रोमोझोम नंबर 2n is equal to 16 आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे. सो Regnum vegetabile between 1967-1977 series published 9 volumes, mostly forming annual list of chromosome numbers. म्हणजे क्रोमोझोम नंबर्स ची पण खूप मोठ्या प्रमाणात लिस्ट बनवली गेली. You can observe here the mitotic chromosome of tetrads of Tradescantia spatacea. क्या आपने Tradescantia प्लांट देखा है? हेलो. Yes, sir. मैं आपको चाहे तो प्लांट दिखाता हूं. यू माइट हैव ऑब्जर्व इट. रिवो आणि ट्रॅडस्कॅन्सिया ही दोन्ही प्लांट तुम्ही गार्डन मध्ये लार्ज स्केल वरती बघितली असतील. बघितलेला आहे. सो दिस वन इज ट्रॅडस्कॅन्सिया आणि याला बर्ड्स येतात. इट बिलॉंग्स टू फॅमिली कॉमेलिनेसी. कॉमेलिनेसीचा मेंबर आहे. आता आपण बघूया रिवो. रिवो पण तुम्ही बघितलं असेल. कदाचित रिवोचा वापर तुम्ही केला असेल. कशा करता सांगतो. स्टोमाटल इंडेक्स स्टडी करण्याकरता तुम्ही लोअर एपिडर्मिसचा पील काढला असेल. सो दिस इज रिगार्डिंग द रिवो अँड ट्रॅडस्कॅन्सिया. चलो. सो क्रोमोझोम नंबर इथे मेन्शन केलेला आहे. मी नंतर तुम्हाला याची जेव्हा नोट देईन त्याच्यामध्ये याचे डिटेल्स मिळून जातील. The next is related to ideogram of somatic complement of Allium ampullaprum. Allium च्या क्रोमोझोम नंबर आहे 32 आणि त्याचा इडिओग्राम किंवा कॅरिओटाइप एनालिसिस केल्यानंतर कसा दिसत होता बघा. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 ग्रुप्स दिसतात. हॅलो. You can observe the 8 groups of 4 chromosome each. Hello. Yes, sir. So chromosome number is 32. So in case of one species, that is Allium apleopersum, you can observe here the somatic ideogram which shows 8 secondary constrictions. तर परवा मी तुम्हाला एक दिवस विचारलं होतं की काय तुम्ही कॅरिओटाइप एनालिसिस शिकला का किंवा इडिओग्राम शिकला का. तो समटाइम this ideogram may be symmetrical or it may be asymmetrical, and regarding the chromosome number also you might be known. In case of Ophioglossum, chromosome number is about 300, even 300 पेक्षा जास्त chromosome. So there are several plant species. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल chromosome number 12 which is common in case of family Solanaceae. So presence of beta chromosome or presence of accessory chromosome or banding behavior of these chromosome, these are considered as a characteristic features of angiosperm. आता त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे क्रोमोसोमल बिहेवियर. क्या आपके ध्यान में है कि इसके पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था एंड नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज क्रोमोसोमल एबेरेशन. हेलो. Yes, sir. And I think it is best known to you, that is structural aberration and numerical aberrations of the chromosome. Fertility of a plant is highly dependent on ability of meiotic chromosome in a pairing. Pairing का मतलब ही है synapsis. Synapsis means pairing and their subsequent separation. Meiotic behavior of chromosome enables comparison between genomes to dictate the degree of homology. मतलब दो इंडिव्हिज्युअल में अगर कोई होमोलॉगी है, दोघांच्या मध्ये कुठला सारखेपणा असेल तर तो सारखेपणा क्रोमोझोम बिहेवियर मध्ये सुद्धा दिसला पाहिजे. सो यू कॅन हॅव आयडिया रिगार्डिंग दिस क्रोमोझोम बिहेवियर आल्सो. नाउ द
The meiotic behavior of chromosome enables comparison between genome to detect the degree of homology. So you might be known homology means similarity. So similarity in the chromosome. Greater degree of genomic non-homology result in either failure or pairing. Failure of pairing का मतलब ही है asynapsis और lose of pairing और pairing lose करना. Chromosome without chiasmata so that chromosome fall apart before the metaphase, which is known as disynapsis. In extreme cases, the entire genome may fall to pair. Genome analysis of suspected hybrids has helped in establishing parentage of several polyploid species. मतलब अलग अलग स्पेसीज का पेरेंटेज डिटरमाइन करने के लिए भी ये काम में आता है. So this one is regarding with the chromosome behavior. Then chemotaxonomy. I think you might have heard regarding the chemotaxonomy. Chemotaxonomy के बारे में नाम आपने सुना होगा. Chemo, that is related to chemical. Chemotaxonomy of plant is an expanding field of study and seeks to utilize chemical information to improve upon the classification of a plant. Chemical evidences has in fact been used ever since man's first began to classify plant as edible and non-edible. शायद आपको पता होगा, आप आज भी बोलते हैं XYZ plant और its part is non-edible. That means it consists of toxic chemical substances which are not for utilization to plant. Chemical information about medicinal plant in herbs published nearly 5 centuries back was concerned with localization and application of physiologically active secondary metabolites. शायद आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पता होगा. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स consists of carbohydrates, lipids and proteins, and secondary metabolites large number of vitamins, minerals, then terpenoids, phenols, steroids, etc. So knowledge about the chemistry of a plant, which is greatly increasing in the last century. So there is enough increase in the knowledge regarding the chemistry of a plant since 19th century. Greatest interest has been generated over the last 40 years. However, with the development of improved techniques for studying biological molecules, especially protein and nucleic acids, in recent years, interest has been focused on the study of allochemy and realization of the concept that the animal kingdom and the plant kingdom have experienced a chemical co-evolution. शायद आपको पता होगा एवरी प्लांट का केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है इट मे बी डिफरेंट. Large variety of chemical compounds are found in a plant and quite often the biosynthetic pathway producing these compounds differ in various plant groups. In many instances, the biosynthesis pathway corresponds well with existing scheme of classification. शायद आपको पता होगा कई प्लांट्स के रूट का पार्ट सिर्फ मेडिसिन करके यूज करते, कई केसेस में लीफ यूज करते, कई केसेस में फॉर एग्जांपल फ्लावर यूज करते, स्टेम यूज करते, बिकॉज दे शो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंटेंट्स. Utilization of studies on DNA and RNA for understanding of phylogenetic relations has received greater boost over the last decade, establishing molecular systems of primary metabolites और secondary metabolites, micromolecules. मैंने अभी आपको primary secondary metabolites के बारे में बताया था. Secondary metabolites, अब इन डिटेल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. फिनॉल, कैटेचॉल, हाइड्रोक्विनोइड्स, then chloroglycinol, pyridol, then betaine, flavinoid nucleics, non-protein different amino acids, हे जे किंवा phenolics, terpenoids, हे जे सगळे आपण बघतो. All these are chemical constituents of a different plant, and specifically these different types of chemical substances present in a different plants only or different group of plant. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल नवीन ड्रग जर तयार करायची झाली तर त्याच्याकरता बायोमोलिक्युल्स डिझाइन करावे लागतात किंवा ड्रग मॉलिक्युल्स डिझाइन करावे लागतात. अँड अकॉर्डिंग टू डिफरंट वर्कर्स बिटॅलिन कंटेनिंग फॅमिलीज अँड देअर पोटेन्शियल रिलेटिव्स कोणते आहेत बघूया. सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन एंगलर पेंटल, देन मादर
chemical classification, Alston and Turner compromise classification, and compromise classification 2 by Mabry in 1976. So आप देख लो सेंट्रोस्पर्मी में चिनोपोडियेसी, अमरांथेसी, निक्टाजिनेसी, फाइटोलासी, अजोएसी, पोर्चुलेकेसी, बैसिलेसी एटसेट्रा फैमिलीज। केमिकल क्लासिफिकेशन में इन फैमिलीज को एक जगह में रखा गया। Even in compromising classification 1 and 2, these are placed together because of their chemical constituents. So pigments such as anthocyanin and anthocyanin, they also play important role in classification of a plant. So remember, different types of alkaloids, steroids, then glucosidal nature compounds, they are used for a purpose of a medicine, and that's why chemical constituent or phytochemicals of plant play very important role. Then we have idea regarding the terpenes. Terpenes include large group of compounds derived from mevalonic acid precursor and are mostly polymerized isoprene derivatives. हा थोडासा केमिस्ट्रीशी रिलेटेड डिटेल्स आहे। जेव्हा चौथ्या सेमिस्टर मध्ये तुम्ही टर्पेन्स, फिनॉल्स हे बघाल त्यावेळेला आपण या डिटेल कडे जाऊ। नाउ यू जस्ट रिमेंबर टर्पेन्स, फिनॉल्स, steroids, these are also their properties which are used for chemical composition of a plant and in taxonomy also. Then non-cemented macromolecules, different types of proteins. Then serology. As far as serology is considered, it is nothing but containing to describe the contents of protein. Protein content काय काय है? Because you might be known, proteins are building blocks of a body, and large number of different types of proteins available in the different plant parts. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल सगळ्या लेग्युम्स मध्ये, सीड्स मध्ये प्रोटीन स्टोअर केले जातात। आणखी कुठल्या कोणत्या वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये these are stored in the different plant parts. So there are various techniques to find out the serology or this protein content. अर्थात electrophoresis technique which is used on large scale for finding out the protein as well as amino acid sequence. So all this information regarding phytochemicals of the plant which is used for taxonomic evidences. आता शेवटचा राहतो तो म्हणजे मोलिक्युलर डाटा, क्लोरोप्लास्ट एनालिसिस, मायटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस वगैरे। हा शेवटचा पार्ट जो राहिलेला आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊ। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. सो नाउ इट इज 1:20. आज आपण इथं थांबू। आपला एकूण सिलेबस मधला जो पार्ट होता त्याच्यापैकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलनॉलॉजी, सायटोलॉजी, फायटोकेमिस्ट्री इथपर्यंतचा पार्ट झालेला आहे। अँड ओनली पार्ट रिलेटेड टू जीनोम एनालिसिस इज रिमेनिंग. आय फर्दर रिपीट, जीनोम एनालिसिस संपल्यानंतर हा इथला पार्ट आपला पूर्ण होतो आणि मग फक्त राहतं टॅक्सॉनॉमिक टूल्स. What are the different tools which we are going to use for taxonomic studies? ठीक आहे, आपण इथं थांबू आणि नेक्स्ट लेक्चर तुमचं शनिवारी आहे, त्यावेळेला नेक्स्ट लेक्चर घेऊ। इज इट ओके? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, थैंक sir. यू वेरी मच। प्लीज कंटिन्यू। अगर किसी का भी मेरे लेक्चर या प्रैक्टिकल के टाइम में लेक्चर और प्रैक्टिकल है तो आपको खुद बताना है, सर ने लेक्चर प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। मैंने आपको कल फ्री छोड़ा नहीं था। आई हैव टोल्ड यू टू अटेंड द स्टेट लेवल seminar workshop because such a type of workshop as well as conferences are very useful for you. आप लोगों के लिए यूजफुल है। जब तक मैं बताता नहीं शायद आपका अभी इतने दिन में एक्सपीरियंस होगा कि आई एम